we have to relate each letter with a sound also. अभी भी पहले भी हमने बात की है कि लेटर इज अ लेटर एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स ऑन अ पेज. जब आप देखते हैं किसी भी पेज के ऊपर एक लेटर को, तो वो क्या है आपके सामने? वो डिफरेंट सर्कल्स हैं, डिफरेंट लाइंस हैं, और किसी लाइन का कॉम्बिनेशन है, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेमी सर्कल और अ लाइन. जैसे डी है तो वो क्या है? एक लाइन है एंड देन सेमी सर्कल है. और सी क्या है? सी इज़ ऑल्सो अ सेमी सर्कल. इसी सेमी सर्कल को जब दूसरी डायरेक्शन में आप एक लाइन के साथ रख दें तो इट बिकम्स डी. And what is A? It is again a combination of three lines. And what is N? Again a combination of three lines but in a different direction and different style. So ये letters वहाँ उतनी देर आपको इस तरह नज़र आते हैं. But the moment you try to pronounce that letter, it becomes a sound. So always relate each letter with a sound, बिकॉज़ आपका लेटर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है अगर वो साउंड नहीं बनता. और आपने तो उसको एज़ साउंड यूज़ करना है ना, व्हेन यू आर कंबाइनिंग इन अ वर्ड और इन इवन पीछे जब इफ़ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट लैंग्वेज मॉडल, वी सेड दैट सिंटेक्स, आप किसी भी सेंटेंस को ट्राई टू ब्रेक इट अप, आप उसको स्टार्ट ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर चंक्स एंड स्मॉलर पीसेस, तो वो एंड में जो स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास बचेगा वो साउंड का होगा. आपने कैट इज कमिंग को आप ब्रेक करें तो कैट इज कमिंग, और आप हर वर्ड को ब्रेक करते जाएं तो एंड में आपके पास साउंड्स या फोनीम्स बच जाते हैं. सो वी हैव टू रिलेट ईच लेटर विद अ साउंड. एंड अभी जब हमने एक दूसरे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की बात की है दैट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो यही वजह थी कि वहाँ we said and we saw that here it is easy to pick the sounds because the alphabet second alphabetic order gives you the very that order of the letters that give you very clear sounds. अब अगर हम सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक चलें तो जस्ट लुक एट दैट वन. वो जो आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, ए पहले आता है, बी पहले आता है और सी पहले आता है. इन तीनों की बात मैं कर लेती हूँ. ए के साथ भी जो हैं देयर आर डिफरेंट साउंड्स व्हिच आर रिलेटेड विद ए, और बी के साथ बी सिर्फ ऐसा लेटर है व्हिच गिव्स यू वेरी क्लियर साउंड ऑफ ब. C again is related to two different types of letter. For instance, C s sound and आपका k sound. So आपके ये जो it becomes bit confusing. So there should not be any confusion for the children who are getting them these letters, again getting these letters and trying to learn these letters as a new concept, because it is just like a new theory, a new concept for those children at that stage. वो इसलिए वो उनके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. दिस इज़ द रीज़न दैट सेकंड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दैट वी टॉक्ड अबाउट एंड वी दैट वाज़ हैविंग वेरी क्लियर साउंड्स. दिस इज़ द रीज़न कि वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर था जिसमें बी पहले था और एम बाद में था, बिकॉज़ सारी की सारी अब जितनी भी वो लेटर्स हैं उनके साथ एक साउंड रिलेटेड है. सो वो आपने लेटर्स को अपने लिए वो साउंड्स के साथ रिलेट करना है. एंड वो साउंड्स जो हैं, these can be animal sounds, these can be the sounds of vehicles, these can be the sounds of human beings, these can be the sounds of music, musical notes. जहाँ से भी आप फॉर इंस्टेंस उठा सकते हैं साउंड, आपको उठानी चाहिए. फॉर इंस्टेंस आप उनको कैट अगर सिखा रहे हैं, सो यू कैन टेल देम टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ ए कैट. और जब वो कैट की वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसको आप लेटर से रिलेट कर सकते हैं. सिमिलरली you will see the you will tell them the sound of some vehicle, किसी की भी हो सकती है. सो ऑलवेज रिलेट दीज लेटर्स टू डिफरेंट साउंड्स, जो कि आपके रियल लाइफ की सिचुएशन से आपकी जो भी आप उठा सकते हैं, विच आर फेमिलियर टू किड्स, विच आर फेमिलियर टू दोज चिल्ड्रन. इट विल हेल्प देम टू लर्न दैट लेटर बिकॉज लेटर इज एक्चुअली अ साउंड. उसके बाद आप बहुत दफ़ा आप देखें, अभी हम जब पीछे अपनी चाइल्डहुड को याद करें तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दीज साउंड्स, बट अभी आप जब देखें डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट नर्सरीज में,
तो दे टेल वेरी प्राउडली कि हम बच्चों को फोनिक्स भी सिखाते हैं, बच्चों को हम फोनिक्स के साथ हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। सो व्हाट इज़ दैट, जब क्या है फोनिक्स के साथ अल्फ़ाबेट सिखाना, बिकॉज़ दे आर फोकसिंग ओवर देयर साउंड एज़ वेल। वो साउंड जो कि लेटर के साथ उससे रिलेटेड है, वो उसको सिखाते हैं। फॉर इंस्टेंस हेड जो है उसको वो ह साउंड, ड साउंड, ज, इस तरह से वो साउंड्स के साथ लेटर्स को सिखा रहे होते हैं। और जब आपने एक लेटर को दैट मस्ट बी रिलेटेड विद अ साउंड टू गिव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दैट लेटर to a child, obviously, who is at the stage of preschool.